Welcome. So in this video we will learn about the nuclear magnetic resonance technique. Nuclear magnetic resonance technique. First we will study the principle of the technique. So this technique measures the absorption of electromagnetic radiation by any nuclei in the radio frequency region of roughly 4 megahertz to 750 megahertz when placed under a external magnetic field. So this is the basic principle of NMR that I will be covering in the next slide also. And in this technique, that nuclei of the atom is involved rather than the outer electrons, as in the case of UV and visible spectroscopy. So in this is the nuclei which is involved, and one of the condition for this technique is that we have to expose the nuclei to the external magnetic field. So in order to cause nuclei to absorb radiation, it is necessary to expose the sample containing nuclei of interest to a magnetic field. External magnetic field is very much required in this case. So if we discover these techniques, we see the principle that what we have to write, that NMR principle we will study first. So it based on the principle that each and every nucleus is having charge and it's spinning around its axis. Therefore, every nuclei, not every nucleus, those nuclei which are having a net spin are behaving like a tiny bar magnet. So again repeating that every nucleus is having charge and spinning around its axis. Therefore nuclei is behaving like a tiny bar magnet. So if I represent a nuclei like this, so it having direction in this, so it behaves like a tiny bar magnet. And when you place this tiny bar magnet in a external magnetic field, say you are applying a external magnetic field of B naught, then this nuclei can have two orientation. Either this nuclei will align towards the magnetic field, or it will align opposite to the magnetic field. So this state is known as alpha spin state, or plus half, and level, or this is also known as minus half level, or beta spin state. Okay, so this nucleus, when placed in an external magnetic field, it can have two orientation. One is with the field, that is known as with the field, and the with the against the field. With the field means it is also called as alpha spin state and plus half state, and there will be, in this case, there will be maximum attraction with the field. Maximum attraction will be there, and lower energy. Whereas in this state, for this at this level, we have beta spin state. This is aligning against the field, and it will be having the higher energy, and there will be maximum repulsion. So we can see here that energy gap is created, that's delta E. And this delta is, of course, is given by NH nu, that Planck quantum theory. And then this energy gap is filled by the radio frequency waves in the region 4 to 750 megahertz. And if any nucleus is absorbing in this at a particular wavelength in the radio frequency waves region, then we will have a NMR spectra, and the peak will be obtained in the NMR spectra like this. Like this, we will having a peak. So this is the basic principle of NMR. I'm again repeating that what we have to write when somebody asks you what is the principle of NMR, you have to write that each and every nucleus is having charge and spinning around its axis. Therefore a nucleus behaves like a tiny bar magnet. And when this tiny bar magnet is placed under the external magnetic field B naught, it can have two orientation possible. One is it can align with the field, and other is that it can align opposite to the field, and therefore this energy gap is created. The lower energy level is known as alpha spin state, or the plus half level, and whereas the other orientation, which is at higher energy, is called as beta spin state or minus half level, and their maximum repulsion will be there. And at the alpha spin state, we will have the maximum attraction which is there. So this energy gap is created, and the radio frequency waves in the wavelength range from 4 to 750 megahertz have sufficient energy to fill this gap, and at the absorption will occur, and then we will have the peak in the NMR spectra. So this is the basic principle, that in this NMR means nucleus involved, magnetic means external magnetic field is to be applied, and resonance, this is called resonance, that
the this energy gap which is created is matching with the energy of the radio wave frequency region, so it is called as the resonance. That your nucleus is in resonance, that means matching of energy has taken place between the radio wave frequency energy and that the energy gap which is created because when the nucleus is placed under the external magnetic field. So this is the basic principle of NMR. So basic principle of NMR spectroscopy, that NMR, as I told you, that each and every nucleus is being charged and it's spinning around its axis, therefore it behaves like a tiny bar magnet. And when you are keeping this nuclei under the external magnetic field, it can have two orientation, with the field and against the field. So energy gap is created, and this energy gap can be fulfilled by or can be matched by the radio wave frequency in the region from 4 to 750 megahertz. So it is based on the principle of resonance. This is the meaning of resonance. Resonance means matching of the energy between the energy gap which has been created when you are placing the nucleus under the external magnetic field and that which is that from the radio wave frequency which is absorbed by the nucleus. So nuclei which possess the property is called spin are considered to be as spinning about an axis, that I told you, and spinning generates a magnetic field known as magnetic moment. Like a magnet bar, this magnetic moment has a north and south pole called nuclear magnetic force. So they're like you are having a magnet that is having the north pole and the south pole. Likewise, this nuclei will also have the north pole and south pole, and then there are two possibilities will be there: maximum attraction type and maximum repulsion type. So if you see that overall this principle we have seen that this technique is non-destructive, that we do not the sample need not to be destroyed, and also non-invasive also. For example, if you are analyzing any sample, we say plant tissues or animal tissues, that no cutting or the damaging of the tissue is required, so it is a non-invasive technique. Then it is used to study the chemical compound quantitatively and qualitatively. So both quantitatively and qualitatively we can determine the chemical compound, and also some dynamic processes, whatever processing that a food material is subjected to, what are the changes which are occurring during the processing of food materials, that can also be determined using this technique. Okay, so this technique is used gives the complete molecular structure of the compound. That this technique is used for structural elucidation. Here I am writing structural elucidation and compound identification. This technique is used for structural elucidation, that meaning we can determine the complete structure of any molecule, and also the compound identification can be done. Okay, so why we need, what is the advantages of NMR? That there is no extensive preparation procedure are required. The sample can be analyzed as such. No size reducing, no deformation, no dilution steps are required, and also no pre-chemical or physical treatment of the sample, and unlike in other spectroscopic techniques is required here. So no pre-chemical or physical treatment of the sample is also required in this technique. Now, which type of nucleus can show are NMR active or can be used for NMR spectroscopy? Those nuclei which are having at least which are having either odd mass number or odd atomic number, those can only qualify to become as NMR active. So those nucleus which are having either odd mass number or odd atomic number can only be qualified to have NMR active, because those nuclei which are having spin number, that is net spin number equal to 0, those will be NMR negative. So a condition for a nuclei to be NMR active is that the spin quantum number should not be 0. Here the spin quantum number should not be 0. Either mass number or odd number should be odd. So here the H1, here in this case you have you can see that there is net spin of half. Here 1 half, 3 by 2, 1 by half, 1 by 2. So all these are, we can see here that all these nucleus are NMR active. Why? Because either the mass number or the atomic number are odd. Because and if both are even, say the carbon 12 6, the here in this case atomic number as well atomic as both are even, 16 8 both are even, 32 6 both are even. So if for them spin quantum number is 0, so these nucleus are NMR inactive. These nucleus are NMR inactive, so they cannot be used for NMR spectroscopy. They are NMR negative.
So in itself, those nuclei which are having either odd mass number or odd atomic number are only NMR negative, NMR positive, or they are NMR active, or these are NMR inactive nuclei. So either since these nuclei are having both the atomic number as well as the mass number as even, so they are NMR inactive. So this is the general design of the NMR spectrophotometer. So here we are having sample 2, we are keeping the sample in it, and then we are placing this cuvette, this test tube under a magnetic field, and then we will have, when you're placing as the principal I have told you, we will have a detector, we will have a RF transmitter because radio frequency is required. So radio frequency transmitter will be there, and then we will have a readout device will also be there. So all the basic components of spectrophotometer are available in NMR spectrophotometer also. So basic principle I told you, when a nucleus is placed in a static magnetic field, it will interact with the field via the dipole, and dipole will tend to align with the field as much as in compass needle aligns with the earth magnetic field. And there are two orientation I have told you, that either there will be alpha spin state or there will be negative, that is a beta spin state. So orientation of the magnetic dipoles in a static magnetic field are different depending on their spin quantum number. Some nuclei align themselves in either the same direction or the opposite direction as the field. Alignment of the dipoles is determined by whether the nuclei position is in a clockwise or anti-clockwise direction. So and that will determine the position of the dipole under the external magnetic field. So a nucleus that has its spin aligned with the field will have the lower energy. So I will told you that this is having a lower energy, also called as alpha spin state, and the nucleus which align up against the field will have called the beta spin state and will have the higher energy and more stable than when it has been aligned in the direction opposite to the field. So this is unfavorable state and this is the favorable state. So this energy gap is created, and then only the radio wave frequencies it will absorb. So when aligned nuclei are exposed to a radio frequency that exactly matches the delta E of the energy is absorbed by the nuclei, causing them flip to the beta spin state, and nuclei are then said to be in resonance. Thus the term nuclear magnetic resonance. A plot of all absorbances resulting from the RF radiation of an organic compound, it is an NMR spectra. Then we will have the signal, or we will have peak in the NMR spectra. This is the basic principle I have covered already. Now the resonance frequency will be different for different nuclei. So it note that the resonance frequency will be same for each type of nuclei. The different type of nuclei will also depend on the strength of the magnetic field. So more strength you will apply magnetic field, then more energy gap will be created and more energy will be absorbed by the nuclei. So this case is explained here. So we have the carbon nucleus, we have C13 nucleus and CH1 nucleus. We can see that if you are applying the constant magnetic field, that is 14100 goes, they are absorbing different strength of the radio wave frequency. It is absorbing 15 megahertz, it is absorbing 16 megahertz. That's the point which was talked about in the last slide. Now the concept of chemical shift and shielding. Okay, let's understand the concept of electrical shielding. So in electroshielding, we know that, let's say we have a organic compound, that CH3 CH2 F. Now this F is electronegative atom, so it will take electrons from this here. So electron density here will be lower as compared to here. So here it will be more electron density, here will be less electron density. So this nucleus which is here, which will feel, if you are keeping this nucleus under external magnetic field, so this nucleus will feel the external magnetic field more, and then therefore more energy gap will be created. I told you that more is the external magnetic field which you are applying, more will be the energy gap which is created. So this nucleus will feel more magnetic field, so there will be de-shielding for this nucleus, whereas there will be shielding because electron cloud is there. So this will also create a magnetic field which is opposite to the applied external magnetic field, and thereby decreasing the strength of the magnetic field. So this nucleus which is here will feel the magnetic field to a lower extent. Therefore in an NMR spectra, if you see the NMR spectra, so this how NMR spectra looks like. So it is having a scale 0 1 2 3 4 5, like that up to 10. So this is the NMR spectra. This is how it appears. That the lower level we have ppm. This is nothing but the parts per million, and then we have a peak of tetramethylsilane here. For every spectroscopy technique, we are adding a compound which is known as TMS in the solution. Whenever we are taking the spectra of any organic compound, we are adding TMS. This TMS is nothing but the tetramethylsilane. The structure is like this.
So your silicon is a metalloid, so it is giving the electron donating to the protons. So here here electron density will be very much. So here also electron density will be high, likewise here and likewise here. So these hydrogen atoms are filling the external magnetic field to a very low extent, and that is why TMS will have the peak at 0 ppm. That here this is the peak of TMS. That is why for every organic compound we are comparing the amount of energy radio wave frequency which is absorbed against the TMS, or in relative to the TMS. So that is called as ppm. ppm is equal to the frequency of the organic compound minus frequency of TMS divided by power of machine in megahertz. So this is ppm. So in this case, if we see that this nucleus is feeling less magnetic field because the electrons are being taken by the fluorine electronegative atom, so this will feeling less, so you will have the peak of this hydrogen at say 4 ppm, like this. And say CS3 here, this hydrogen will you will have the peak at 1 ppm, like this. So 1 ppm, because this is the electron cloud is shielding the hydrogen atom from the external magnetic field. This is called shielding. So electron cloud is shielding the hydrogen atom from the external magnetic field. That is why this peak will be here, this hydrogen peak will be here, and this hydrogen peak will be here, because there will be less shielding and it will fill the external magnetic field more, and then we have the peak at 4 ppm. Similarly, if we want to compare, say we have two organic compound, one is CS3F, other is CS3Cl. So this is more electronegative, so the electron density here it will be lower and here it will be higher, because this is less electronegative, so it won't able to take that much electron from the here, so thereby this will be having more shielding, and since this is having more shielding, so the peak will obtain around 2 ppm here, and that's CS3F will be around at 4 ppm. Because this is there is more de-shielding in this case. So in this direction, de-shielding is increasing, and here in this direction your shielding is increasing. Okay, so this is the way general NMR spectra looks like. So ppm I will told you. So this one more fact I will tell you. So it depends on the external energy gap creation. It depends on the external magnetic field which you are applying. Say extent of the external magnetic field is m, energy gap will be created E. So increasing the magnetic field strength as 2m, the energy gap will be created as 2E. Likewise 10m if you are creating, then energy gap will be created to 10E. So the ratio will be same for every time. The ratio will be same, and then this the value of ppm. The way to represent this fact is making use of ppm. This is also called as chemical shift. इसको हम chemical shift भी बोलते हैं. तो chemical shift के मैंने आपको बताया that the frequency of the organic compound minus frequency of the TMS tetramethylsilane divided by power of machine, that is in megahertz, into 10 power 6. So here into 10 power 6 is left, here 10 power 6. Say a organic compound is there which is absorbing the radio wave frequency at 250 megahertz, okay, relative to TMS which is absorbing at 2000 hertz. So relative frequency will be 250 hertz, and say power of the machine is 60 megahertz. So 60 into 10 power 6 into 10 power 6, that is the formula, and then 10 power 6 will go, and here it will go, so it is absorbing at 4 ppm. So it is absorbing at 4 ppm. Now this gap, that is 0 to 1 ppm, the 1 ppm gap, this gap is varying. If you're changing the magnetic field, external magnetic field, then this gap will change. How? Say if I say this gap, say x ppm, the value of this gap is say x, 0 to 1 is x. So if you calculate the ppm value here in this case, so ppm is equal to x, that is the relative to the TMS, the organic compound has absorbed the energy, divided by power of machine. Say power of machine you are keeping as 60 megahertz, say in this case 60 into 10 power 6 into 10 power 6. So it will go, and x will equal to 60 hertz.
Okay, so 60 hertz. So 1 ppm will equal to 60 hertz when the power of machine is 60 megahertz. So if the power of machine is 100 megahertz, then your gap, that 1 ppm will be equal to 100 hertz. If your power of the machine is 150 megahertz, then your 1 ppm will be equal to 150 hertz. Okay, so the gap, this gap is dependent on the extent of magnetic field which you are keeping, or the power of the machine in which the nucleus is kept. So say if the power of the machine is say x megahertz, then this gap will be x hertz. Okay, so now this fact is also having some important that will be covering in the coming slides. So this way we have seen how the NMR spectra looks like. So what is the meaning of ppm, what is the concept of shielding and de-shielding that we have seen, and now we say that what is the importance of NHR. What two things mainly the NMR tells. If we are making use of H1 NMR, then from this we can have two important things about the organic compound, that it is having how many types of hydrogens are there, that is types of hydrogen we can know, and also what is their ratio, the ratio of these hydrogen ratios, their ratios also we can know. How, say if a organic compound, say this is CH3 CH2 CH3, so this organic compound will have two peaks, one for this hydrogen atom and the other for these two hydrogen atom. So two peaks will be having. So types of hydrogen means the number of peaks we are having, that obviously that type of hydrogen we will be able to know. So two types of hydrogen there, and their ratio, that is here 6 hydrogen atom is there, 2 is there, so 2:6, that is 1:3. Their ratio also we can know using the NMR technique. So two types, that how many types of hydrogens are there. Say if we are having CH3 CH2 CH2F is the organic compound. So here A, B and C, there will be there are 3 types of hydrogens are there, and obviously A peak will be here because there will be maximum de-shielding in the case of A, then we have B, and then we have C. So A, because there will be maximum de-shielding here, in this case we will have A peak here and then B peak here, and because there is less de-shielding, and here the comparatively least de-shielding will be there for this hydrogen atom, so the peak will be near to the 0 here, near to the TMS. Okay, so हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, उनकी रेशियो क्या है, और कौन से पीक कहाँ पे आती है, रिलेटिव उनकी पोजीशन का हम पता लगा सकते हैं. तो हमने देखा कि रिलेटिव पोजीशन हमने यहाँ से पता लगाई. जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि CH3F है, आपके पास दूसरा जो है CH3Cl है. तो आप देखेंगे क्या कि CH3CF में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सोल्यूटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो यहाँ पे जो फील्ड होगा इस न्यूक्लियस को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड होगा वो आपका कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगा, एनर्जी गैप ज़्यादा बनेगा. तो इसकी जो पीक है ये इस साइड ज़्यादा आएगी, इसकी साइड की तरफ आएगी, जो मैंने आपको 4 ppm पे बताया था. और ये जो पीक आएगी आपकी ये अराउंड 2 ppm पे आएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी-शील्डिंग कम है, और डी-शील्डिंग कम है यानी कि गैप कम बनेगा. गैप कम बनेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो भी कमजोर होगी, तो वो पीक आपकी इस तरफ से आएगी. तो HNMR जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, उनकी रेशियो क्या है, और जो हाइड्रोजन की पीक है वो रिलेटिवली कहाँ आएगी, ये भी हमें थोड़ा सा पता चलता है HNMR टेक्निक से. तो अब हम थोड़ा सा स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं NMR में. स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं NMR में. तो स्पिन स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है. जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास में 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक पीक इस टाइप के हाइड्रोजन की आएगी, दूसरी पीक इसकी हाइड्रोजन की आएगी, और इनकी रेशियो 3:2, यानी जो पीक के जो एरिया होगा, जो भी हमारी पीक बनेगी उनका एरिया जो है वो 3:2 रेशियो में होगा. और एरिया की रेशियो ही हमें हाइड्रोजन की रेशियोज का पता बताती है. तो जैसे मान लो ये A1 है, ये तो CH2 जो वाली पीक होगी वो ये वाला हाइड्रोजन होगा, CH3 वाली ये होगी. इसका मान लो एरिया A1 आया, इसका एरिया 2 आया, तो A1 A2 की जो रेशियो है वही आपकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है उनकी रेशियो होगी, यानी कि 3:2.
3:2, जो आपकी जो रेशो होगी वो आपकी 3:2 रेशो होगी। और इसमें जो ये आपके आएगा तो यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है तो 2:3 रेशो होगी। ठीक है, तो ऐसा आपका हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी पीक बड़ी होती है लेकिन उसका एरिया बहुत ही कम होता है, ऐसे लाइक दिस। और कई बार छोटी पीक होती है लेकिन उसका एरिया जो है वो आपका ज़्यादा होता है। तो कई बार जो चीज़ लगती है वो वैसी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप देखते हैं ये पीक छोटी है लेकिन इसका एरिया फिर भी ज़्यादा है, जबकि ये पीक बड़ी है इसका एरिया फिर भी कम है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इन एरिया का जो रेशियो होता है वही हाइड्रोजन आइटम्स का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उनकी रेशियो के इक्वल होता है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखें, मान लो CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो इसमें दो तरह के हाइड्रोजन है और इनकी रेशियो जो है 6:4 है, यानी कि आपकी 3:2 है। और जो इनकी दो पीक्स आएंगी उनका एरिया भी 3:2 रेशियो में होगा। और हम पता लगा पाएंगे कि हाइड्रोजन की जो टाइप्स हैं उनकी रेशियो कितनी है। तो HMNR से हमने बताया कि तो हमें ये पता चलता है कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, उनकी रेशियो क्या है और उनकी रिलेटिवली पोजीशन क्या है, ये भी हमें पता चलती है। तो ओवरऑल अगर हम काफ़ी टाइप के NMR एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक टाइप पर लगाएं तो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर भी पता उसका लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो स्पिन स्प्लिटिंग समझने के लिए हम एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ड्रॉ किया CH3 CH और Cl और Cl। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी एक ये हाइड्रोजन एटम है तो अब इसकी एक पीक आएगी और ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसकी भी अलग से एक पीक आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पीक होगी क्योंकि इसमें अंदर डीसील्डिंग ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ppm पे आएगी और ये कम ppm पे आएगी क्योंकि इसमें डीसील्डिंग जो है वो आपकी कम है। लेकिन ये ऐसी पीक जनरली आती नहीं है, इसकी वजह से इसमें पीक पीक स्प्लिटिंग होती है। तो जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है तो इस हाइड्रोजन की जो पीक आएगी वो दो भागों में बटेगी। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ इस पीक ये जो पीक आएगी ये 4 भागों में बटेगी। तो इसका होता है पीक पीक स्प्लिटिंग। वो कैसे, जैसे इसकी जो पीक होगी अब वो ऐसे आएगी, तो ये जो पीक थी वो स्प्लिट हो गई है दो भागों में। यहाँ पे अगर ये 3 अगर हम बात करें 4 में पीक आनी चाहिए तो 4 पीक कैसे आएगी, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपकी 4 पीकें आएगी। तो आपने देखा स्प्लिटिंग हुई 4 में, तो 4 में ये टूटी है, यहाँ पे 2 में टूटी है। ठीक है, ये आपकी 2 में टूटी है, यहाँ पे आपकी 4 में टूटी है। ठीक है, ये आपकी टूटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 स्प्लिटिंग हुई है। और ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें ये इस हाइड्रोजन एटम की वजह से हुई है और ये जो स्प्लिटिंग हुई है वो इस हाइड्रोजन की वजह से हुई है। दो भागों में ये टूटी है। तो अब हम ये देखेंगे स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग होती क्यों है। तो जैसे मैंने बताया ये जो अब इस न्यूक्लियस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो इसकी दो ओरिएंटेशन हो सकती है, विद द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ हैं तो इसकी ओरिएंटेशन भी इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रही है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो पहले अगर हम एक का केस ले लें, दो, अगर ये इसकी वजह से दो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो सकता है तो उसको बढ़ावा देगा, या फिर ये अपोजिट टू द अलाइन हो सकता है ये वाला न्यूक्लियस, या अगेंस्ट एक्सटर्नल तो उसको डिक्रीज करेगा। तो अगर इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली जो पीक है वो थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, और अगर डिक्रीज करता है तो थोड़ी सी राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो अगर हम कंडीशन देखें तो ये अगर मान लो ये वाला जो न्यूक्लियस है अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास हो जाता है तो ये कंडीशन हो सकती है और इसको थोड़ा सा बढ़ाएगा। और अगर मान लो ये अगेंस्ट होता है तो अपोज करेगा तो थोड़ी सी जो है शिफ्टिंग पीक की इस साइड हो जाएगी। तो हमारे को कहेंगे कि हमारी जो बीम जो पीक है वो स्प्लिट हो गई दो भाग। अगर मान लो कोई टू वाला केस है, मान लो 2 हाइड्रोजन वाला केस है हमारे पास, ये वाला मान लो एक हमारे पास कंपाउंड है Cl है, CH2 है, CH है और FF है। मैंने बताया जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इस पीक की स्प्लिटिंग होगी दो भागों में ऐसे। रीज़न मैंने बता दिया, ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फेवर कर सकता है तो उसको फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, ये वाली पीक आएगी। और अगर ये अगेंस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड भी तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, स्प्लिटिंग कम होगी तो ये वाली पीक आएगी। ठीक है, लेकिन अगर 2 की बात करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मान लो अगर ये दो हाइड्रोजन आइटम, क्या 3 केस हो सकते हैं, या तो दोनों हाइड्रोजन आइटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन अपने आप को अलाइन कर लें सेम डायरेक्शन में, या ये क्या करें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लें, या एक सेम डायरेक्शन में करें और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में करें ऐसे। तो
तो ये 3 केस हो सकते हैं। तो इसकी पीक जो हमारा जो पीक बनेगी वो इस तरह से आएगी। तो ये आपने देखा एक पीक को 3 में स्प्लिट कर दिया। तो ये जो पीक आएगी इस हाइड्रोजन एटम की वो 3 भागों में बटी होगी, क्योंकि इस 2 हाइड्रोजन की वजह से ये 2+1 3 भागों में बटी होगी। और ये जो हाइड्रोजन है इसका ये एक हाइड्रोजन है, तो ये जो पीक है जो इसकी जो पीक आएगी वो 1+1 यानी कि 2 भागों में बटी होगी। ठीक है, तो 2 भागों का मैंने आपको रीज़न बता दिया। 2 का तो ये है आपका ये वाला। अब मान लो ये इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने बताया आपको 3 भागों में बटी होगी। क्यों है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंग हो सकते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम, या फिर दोनों अपोजिट हो सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, या एक अपोजिट हो सकता है एक अलाइन हो सकता है। तो जो पीक आएगी जी, क्योंकि ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा तो एनर्जी गैप भी ज़्यादा क्रिएट होगा। एनर्जी गैप ज़्यादा क्रिएट होगा तो ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा आएगा। इसकी बात करें तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका अगेंस्ट डायरेक्शन में होगा और स्ट्रेंथ कम होगी, एनर्जी गैप कम बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा वो भी कम इंटेंसिटी की भी ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक अपोजिट, तो इसमें जो है दोनों बीच में होंगे, और क्योंकि दोनों होने की संभावना ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ जो है वो आपका ये वाला होगा, बीच में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से जो है पीक स्प्लिटिंग होती है। अगर इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और कंपाउंड हम देखें, इस वाले में आप देखें जैसे ये 3 मैंने आपको होता है 4 भागों में टूटेगा, तो ये क्या हो सकता है? 3 केस हो सकते हैं आपके, 4 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? या तो तीनों जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लें अपने आप को, या फिर तीनों जो है अपोजिट करें, या तो 2 एक साथ अलाइन कर लें, या दोनों दो जो है अपोजिट हो जाए ऐसे। ठीक है, तो आपके ये 4 केस हो सकते हैं। जब ये वाला केस है तो आपकी पीक ऐसी होगी, ऐसी, और अगर ये वाला केस है तो आपकी पीक की सबसे यहाँ पे होगी माइनर पे, और जो बीक वाले पीक हैं या तो एक ऐसे और ऐसे। तो आपने देखा एक ही पीक इसमें स्प्लिट हो गई है, 4 भागों में आपकी स्प्लिट हो गई है ऐसे, राइट। सो इस तरह से आपका देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो अलाइनमेंट है ये न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहा है, ये वाली अलाइनमेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज कर रही है। तो ये वाली पीक होगी और ये वाली पीक होगी। अब क्योंकि 2 ये फेवर कर रहे हैं तो ये वाली पीक होगी है, और अगर ये दोनों अपोजिट कर रहे हैं तो आपकी ये वाली पीक होगी। ओके, तो इस कंसेप्ट को हम स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। स्पिन स्प्लिटिंग मतलब एक जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस को स्प्लिट कर रहा है, उसकी जो पीक है वो स्प्लिट हो रही है। ये क्यों स्प्लिट हो रही है ये हमने देख लिया, कैसे स्प्लिट हो रही है, कितने भागों में स्प्लिट होगी। तो अगर स्प्लिट एक होती है, अगर दो में स्प्लिट होती है कोई पीक तो उसको हम डबलेट कहते हैं, 3 में होती है ट्रिपलेट कहते हैं, 4 में होती है तो हम क्वार्टेट कहते हैं, क्विंटेट 5 को कहते हैं, ऐसे आपकी सेक्सटेट होती है, हेप्टेट होती है। तो इस तरह से जो है स्प्लिटिंग पीक जो है स्प्लिटिंग होती है, और पीक को हम इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी पीक की स्प्लिटिंग होती है। और उन टाइप्स ऑफ पीक को हम क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो एक और टर्म इसमें रह गया, एक जे कपलिंग को कांस्टेंट होता है, जे कपलिंग कांस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये मैंने आपको पीक स्प्लिटिंग के बारे में बता दिया, तो ये जो इन 2 पीक्स के बीच में गैप है इसको हम जे कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी 2 पीक के बीच के जो गैप बनाएगा उसको हम जे कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो जे कपलिंग कांस्टेंट है ये सिर्फ नेचर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, ना कि हमने कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हम मशीन का पावर रखेंगे उतना ही पीपीएम उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, उतने ही हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसकी 1 पीपीएम बन जाएगी। यानी कि जो पीपीएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। अब मान लो कि हमने क्या है ये पीक है, अब हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों पीक का ये दोनों पीक सेम है या फिर
अलग अलग पीक्स हैं, तो कई पीक बार इतनी क्लोज हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि ये बीम की स्प्लिटिंग हुई है, ये दोनों अलग अलग पीक हैं। तो इसको अगर मुझे ये पता करना है कि ये दोनों पीक अलग अलग हैं या फिर सेम पीक में ही स्प्लिटिंग हुई है, तो हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को हम दो अलग अलग मशीन के अंदर रख देते हैं। तो अगर मशीन में अलग अलग रखेंगे तो हम देखेंगे क्या, जो वेव फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी, लेकिन जब अगर ये सेम ही पीक होगी तो ये जो डिस्टेंस है, जे कपलिंग कांस्टेंट है, वो अपना कांस्टेंट रहेगा। उससे हम ये पता लगा लेंगे कि ये जो पीक है ये सेम पीक का ही पार्ट है या फिर ये जो है दो अलग अलग पीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जे कपलिंग कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द power of the machine under which the nucleus is kept, whereas it is dependent on the nature of the hydrogen that the a nucleus is having in its vicinity. And if you want to know that whether these two, there are two peaks and you are confused that whether these are the part of the same peak or they are two different peak, what you will do, you will keep the nucleus under two different machines with different power, and if this gap is changing, then you will confirm that these two are the different peak. But if this gap is not changing, then you will say that these are the part of the same peak, and then that the splitting has taken place because of the nature of the nucleus which are around that particular nucleus. So let's discuss about the chemical shift. So chemical system at the definition लिखनी the frequency at which a resonance is observed in the spectrum, किस frequency पे resonance observe होता है spectrum के अंदर, उसे हम chemical shift कहते हैं। is equal to peak position in hertz related to TMs, that is frequency of organic compound minus frequency of TMS divided by power of machine or spectral frequency, that is the power of machine इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये केमिकल शिफ्ट भी कहलाता है, पीपीएम भी कहलाता है। तो इट हैज़ द यूनिट्स ऑफ पीपीएम। तो केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट होती है वो पीपीएम होती है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो हम जो स्पेक्ट्रा आता है तो हम देखेंगे एक्सिस पे हमारा पीपीएम होता है, केमिकल शिफ्ट स्केल बोलते हैं इसको पीपीएम में, और 0 पे हमेशा टेट्रामेथाइल साइलिन आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आपके मिथाइल की तरफ सारे जो मिथाइल के हाइड्रोजन आइटम्स हैं उनकी हाइड्रोजन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो शील्डिंग ज़्यादा होगी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसके कारण क्या है, जो इसकी पीक है हम 0 पे आती है, और जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम इसके रिलेटिव देखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई 4 पे पीक आ रही है, तो यहाँ पे अगर जो भी पीक आएगी तो ये फ्रिक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व की इसकी यहाँ से रिलेटिवली, अगर मान लो इसने 2000 पे की है, यहाँ पे आपका 2240 पे की है, तो रिलेटिवली कितनी की है 240। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 240 अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, मान लो 60 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, तो उसको 10⁻6 हो गया इंटू 10⁻6 जो फार्मूला है, इंटू यहाँ पे आपका 10⁻6 भी होता है, यहाँ पे इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा। अगर पीपीएम से मल्टीप्लाई करना है तो 10⁻6 करेंगे तो आपका ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 पीपीएम आ जाता है। ठीक है, तो 4 पीपीएम पे आपकी पीक आएगी, ये इसका मतलब होता है। अगर हम देखें कि मैंने बताया था कि HNMR से हम 3 चीज़ें पता मिलने लगाते हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनकी क्या रेशो है, और तीसरा जो इनकी पोजीशन भी क्या आएगी। अगर हम NMR स्पेक्ट्रा देखेंगे तो क्या क्या पोजीशन हो सकती है वो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो अब देखें जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर हम देखते हैं एक ही टाइप का हाइड्रोजन आइटम होता है, तो एक सिग्नल आएगा। अगर ये 2 कंपाउंड देखें, देखिए एक इसमें ये टाइप का हाइड्रोजन है, दूसरा ये टाइप का हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्नल आएंगे। अब इसमें देखें हमारे 3 टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखेंगे, एक 2 और 3 टाइप के हाइड्रोजन दिखेंगे, तो इसमें 3 सिग्नल आएंगे। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है और हमारे पास कितनी पीक्स आ रही हैं, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि कितनी टाइप्स के हाइड्रोजन है, पहला, दूसरा उनकी रेशो क्या है, तीसरा हम किस पोजीशन पे वो NMR स्पेक्ट्रा में आने की संभावना है, हम ये भी पता लगा पाएंगे। अब जो स्लाइड आपको बता रही है ये टिपिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यूज बता रही है। जैसे एल्कोन का जो हाइड्रोजन है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9 डेल्टा पे आता है, 1.3 डेल्टा पे एल्केन का आता है, एल्केन CH का आपका 1.4 पे आता है। उसी तरह से अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल है, दैट इज दिस इज नथिंग बट द फिनोल, तो 4 to 7 वेरिएबल होता है, तो आपका 4 to 7 में आपका केमिकल शिफ्ट में आपकी इसकी पीक आती है। तो ये टिपिकल जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है वो स्लाइड में दी हुई है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो मेनली डेयरी इंडस्ट्री में NMR यूज़ होती है वो 3 तरह की होती है, H1 NMR, C13 NMR और P31 NMR। तो हम देख सकते हैं तीनों में मास नंबर ओड है, तो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियस हैं ये NMR एक्टिव हैं।
लेकिन जो C13 एनएमआर के साथ हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि नेचुरल जो अबंडेंस होता है C13 का वो बहुत ही कम होता है। 1.08% ऑफ ऑल कार्बन आइटम्स इन नेचर जो है वो C13 है, इसलिए इसका नेचुरल अबंडेंस कम है। तो ऑब्वियसली बात है, जो सिग्नल जो होंगे वो 6000 वीकर होंगे देन द प्रोटॉन रेजोनेंस। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो 6000 वीकर होते हैं देन द प्रोटॉन रेजोनेंस। Now solvents for NMR, because when we are having a compound and we have to dissolve it in solvent, and that solvent should be devoid of hydrogen atoms, because ultimately we are studying the H1 NMR. So the compound, the solution or the solvent structure should not have the hydrogen atom in it. So for example, it is important to note that the solvent itself does not contain any simple hydrogen atoms, because they would produce confusing pinks in the spectrum. So such solvents, one is that carbon tetrachloride is there, and other is carbon deuterium chloride is there, CdCl3 instead of CHCl3. So CHCl3 should not be used because it is having its own hydrogen atom and we will have the confusing peaks. So solvents such as trichloromethane, which does not contain any hydrogen, or solvent in which any ordinary hydrogen atoms are replaced by its isotope deuterium, for example CdCl3, should be used. And apart from the solvent, we have to add tetramethylsilane also, because it has 12 hydrogen atoms, all of which are in exactly the same environment, and hydrogen nuclei are the most shielded from the external magnetic field. Why? Because electron density is more here electron density is more, here it is more, here it is more, here it is more. So because it is denoting the electron, so this will feel the external magnetic field to a lower extent, and then its peak will come at 0 ppm. That I've told you. Need to increase the magnetic field by the greatest amount to bring the hydrogen back to its resonance. Peak at 0 ppm, hydrogen atoms of TMS. Now if we see the application, what are the applications of NMR in dairy industry, or as such, that it helps in the structural elucidation of the most organic compounds. Structural elucidation. NMR technology is extremely versatile and can serve as a basic instrument for basic R&D. We can conduct the basic R&D also, applied R&D also, and also for monitoring the processes. This technique can be used. This has importance in quality control in industries also, where purity of the product is maintained. It can has a application in quality control. We can analyze the composition of the food products also using NMR technique. Composition of products can also be determined using food products, that is using NMR. And in apart as far as food materials are concerned, name the food where it is not having the application. All the foods can be analysis of all the foods, namely chemical and physical characteristics of all the types of food, like meat, fish, dairy products, vegetables, fruits, juices, cheese, wine, emulsified materials, can be done by using this technique. And if you want to measure specific properties like freeze thaw is there one property, present days alcohol, ripening, rheology, water content, state of water, quantitation of fat, water, saturated versus unsaturated fatty acid content, adulteration and ripening. All these are application of some of the applications of NMR. So that NMR is still to be exploited. It not as much exploited as far as the food material is concerned. So this technique still is to be exploited, especially concerning to the detecting the adulteration in milk and milk products. Now coming to application in dairy industry. So first of all, that we know that among the three nuclei, H1, C13 and P13, one have been extensively used in dairy industry. Among all the nuclei, these three nuclei are mostly used in dairy industry because the compounds, or because the components of milk are having these items in them. So these three are mostly used in dairy industry. Milk fat lipids can be analyzed by either C1, H1 or C13 spectra, the later giving the better resolution. So C13 spectra gives here the better resolution as compared to the H1, although the intensity is weaker, but then resolution is better. That separation of the peak will be better in the case of C13 spectra. Coming second is that composition of milk fat, providing quantitative data on the relative molar fraction of oleic, palmitic, butyric and triglycerides, boric acids and triglycerides. So we know that in milk fat we are having so many fatty acids, right, from C4 to C24. So these fatty acid molar fraction can be determined using NMR. And then also the positional isomers. We know that if we have a fatty acid, say this is a fatty acid, CH2O, C double bond R1, this is CHO, C double bond O R2, CH3, CH2, sorry, here also CH2, O, C double bond O R3.
So this is the basic structure of fat or triglyceride, and this position is known as S1 position, this one is known as SN2 position, this one is known as SN3 position. So using this technique we can also determine the position of different type of fatty acids. Say palmitic acid is at present at which position, whether it's present in SN position, S2, SN2 position, SN3 position. For example, if palmitic acid is there at the SN2 position, it helps in the infant nutrition. Digestibility of the fat improves when palmitic acid is at the SN2 position. So this has been observed. So knowing the position of different fatty acids in a triglyceride molecule at SN1 to SN3 position is possible using this technique, and that can be related to the nutrition, to the various aspects of the nutrition. Now because in milk fat we have phospholipids also, the various phosphorus containing compound also in milk. So PNMR can be applied for the analysis of milk and milk fraction, allowing the simultaneous analysis of phospholipids, phosphorylated carbohydrates, inorganic phosphate, phosphoserine and other phosphorylated compounds from a single spectrum. So PNMR has been applied to the analysis of milk and milk fractions, allowing the simultaneous analysis of phospholipids, phosphorylated carbohydrates, inorganic phosphate, phosphoserine and other phosphorylated compounds from a single spectrum we can determine. All the phosphorus containing compounds in or components in milk can be determined using P31 NMR. So here is the P31 NMR spectra of the phospholipid mixture in cow milk and buffalo milk. We can see that the peaks of phosphatidylserine, phosphatidylethanol, amine, phosphatidylethanol, plasminogens, pingomylins, phosphatidylinositol, all these peaks can be observed in the spectra of the cow milk and buffalo milk from the phospholipid mixture isolated from the same. Now coming to advantages. Advantages of NMR include that it is a non-destructive and non-invasive technique. As already mentioned, no pre-chemical treatment of the sample is required, can be used online in food processing, that when the food is being processed it can be in between in the online can also be used. It gives the complete structure of the molecular compound, operates at room temperature, it is not time consuming, so do not require time, we can have spectra in few seconds. Now disadvantages are that C13 NMR spectra are not so accurate because of lower abundance. Lower abundance is there because signals are 6,000 times weaker as compared to the H1 NMR spectra. As I already told, usually several scans are taken for a good C13 spectra. It is a less sensitive technique and it enables us to study the ferromagnetic materials and samples containing significant amounts of paramagnetic species also. So if these type of compounds are present, then obviously these will affect the HN1 spectra. Okay, so if a sample contain paramagnetic material, obviously these will be affected by the external magnetic field and then obviously produce the confusing peaks in the spectra. So just to conclude, that NMR is a non-invasive and extremely versatile tool in food science, food analysis, authentication and quality control of the food stuff. Food authentication means that if you want to know that whether a component, where different types of components which are originally present in the sample are actually present in it, that also can be determined. So this technique can simultaneously characterize the chemical as well as structural composition, and thus well suited for industrial R&D also and also process monitoring applications also. NMR is a high cost content, need to develop affordable NMR hardware and analysis software. So NMR is very costly technique, so we need to develop affordable NMR hardware and